The big story that's affecting our students, specifically those wanting to pursue the course in medical, has been the NEET results. Remember, these could have been future doctors, but they are currently protesting on the streets. And the reason is that they allege there has been a malpractice when it came to the results that were declared. Opposition has jumped in and targeted the government at the centre over NEET examination results. A fresh petition has been filed on the Supreme Court to reconduct the fresh examination and citing discrepancies in the results. Opposition is targeting the government because they are saying the examination in itself is biased against poor students and undermines federalism. Basically, the controversy erupted. 67 students achieved a perfect score of 720 in the exams. 6 of them identified as being from the same examination centre in Faridabad in Haryana. So there is the allegation of paper leak, of malpractice in the results, and if specific students have been favoured. सारी रैंक ऊपर बढ़ गई, ये जो कट ऑफ ऊपर बढ़ गया, मेन मुद्दा ये है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसके दो प्रमुख कारण निकल के आ सकते हैं। पहला कि पेपर मास लेवल पे लीक हो गया। पटना पुलिस की एफआईआर में ये चीज लिखी हुई है कि 5 मई को उन्होंने 4 अभ्यर्थी को पकड़ा है सेंटर से, जो एक बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 दिन से पेपर था, हम रूम में बैठ के पढ़ लेते, वही पेपर एग्जाम में आया है। 13 लोग को गिरफ्तार किया है और वो लोग पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में, बेल नहीं मिली। मतलब संगीन आरोप है पेपर लीक के। ऐसे पेपर लीक के और इश्यूज गुजरात वगैरह से भी आए हैं। सबका ये कहना है कि इस बार रैंक इन्फ्लेशन हो गया है। जो जिस मार्क्स पे पहले अगर एक कैंडिडेट की रैंक 500 थी, अब वो पहुंच के 20,000 पहुंच गई है, तो उनको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। और ये रैंक इन्फ्लेशन इसलिए हुई है क्योंकि एक क्राइटेरिया किया ग्रेस मार्क्स का एनटीए ने, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इस तरीके से ग्रेस मार्क्स देंगे। इसमें तो बहुत इनजस्टिस है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप ये स्टूडेंट्स, मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो इतने एफिलेंट फैमिली से नहीं हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तभी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहते हैं। और अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिला अभी, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। So let's try and understand what is unfolding in the court, because that will be the focus now. Our legal correspondent Kanu Sarda is joining me this morning. Kanu, good morning. Are we expecting the hearing today itself? And because there have been multiple petitions that have been submitted to the court, how will the court likely, and the top court of this country, likely to take this up? Well, Pooja, but there are a batch of petitions challenging the examination aspect and the declaration of the results. So the students have approached the top court, saying that there are a lot of discrepancies, especially in the allotment of the grace marks, because there was no clarity as to when the examination form was filled that any kind of grace marks was given. But now LTA has decided to give away the grace marks. This has led to huge uproar among the students, because many students have got rank 1 in the NEET examination. So they are saying that the grace mark concept was not known. So this is one of the contentions. Also, there were contentions raised that as to how from the same exam center many students have secured the complete marks. So these are the kind of allegations that the students are raising. And students have also raised that there are multiple complaints filed across the country over the cheating happened or the leak of the paper that has happened there, and the people have been arrested and are in judicial custody. So these kind of allegations will be raised by the petitioners before the top court today, and the top court is expected to seek a reply from the NTA. But remember, NTA has already constituted a 4-member committee to probe as to how the results have been. There are allegations over the results declared of the NEET. So the committee was retired chairman. So the report is expected in a week's time. So it is expected that the NTA will tell the committee that the court should not interfere until the NTA committee's report comes out. And Kanu, keep updating us what unfolds in the court, because it could turn to a legal route as well. This national eligibility cum entrance test primarily is for the medical courses, and that's why, remember, many are saying it's extremely crucial that there shouldn't be a malpractice. I want you to take a look at this report. 67 students get a perfect score. 6 of them from the same examination centre in Faridabad in Haryana. And are there inflated marks? These are the allegations right now, asking for an investigation. Just a coincidence?
or something sinister was brewing. More in this report. ABVP and NSUI, the student wing of BJP and Congress, respectively, protesting against alleged irregularities in NEET, the exam for admission into medical courses. 67 toppers with 100 percentile marks, grace marks to over 1,500 students. NEET undergraduate 2024 results continue to spark doubts in minds of aspirants. Eyebrows raised over dozens of students who got the perfect score, many from one exam center. Some students claimed that the mark of near perfect score of 718 and 719 is not possible. एनटीए कोई पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहा है, कई समय से ऐसे धांधली चलते हुए आ रही है। जैसे अभी एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बोला कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यदि कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में गिरफ्तारी, झारखंड में गिरफ्तारी किन लोगों की हो रही है? अगर एनटीए के हिसाब से अगर मार्क्स ग्रेस मार्क दिए गए तो किस आधार पर ग्रेस मार्क दिए गए? किसी को 50, किसी को 80, किसी को 120, क्या क्राइटेरिया सेट किया आपने? अराउंड 30,000 रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है इस साल, जो कि लाइक पॉसिबल नहीं है। या तो पेपर लीक की वजह से हुआ या ग्रेस मार्क्स। सर, ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड जब एनटीए ने कुछ भी नहीं बताया था, जब अलग सर वगैरह सारे कोचिंग्स ने आवाज़ उठाई तो एनटीए ने क्लैरिफाई किया कि 1563 स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि एनटीए कवर अप करने का ट्राई कर रहा है। The exam body NTA has clarified, saying an easier exam, a question with 2 correct answers and grace marks due to a loss of examination time led to the spike in marks. ये इश्यू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। Parents of affected students have moved Supreme Court, seeking a thorough probe. हम एनटीए से एक सही जवाब चाहते हैं। कल भी एनटीए रिलीज किया था, पर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा उन्हें, ग्रेस मार्क्स वाली चीजों को भी अच्छे से समझाना होगा उन्हें। Several opposition leaders, including NEET baiter DMK, have claimed large-scale irregularities. People are opposing NEET. Mr. Rahul Gandhi has said that NEET exam should be scrapped. Mr. Eknath Shinde says the government has to appeal. We will appeal to the Supreme Court and get this exam scrapped. The entire country is up against NEET. The ground is ready. Within a year, NEET will be scrapped. Education Ministry has set up a 4-member panel to re-evaluate grace marks to over 1,500 students amid controversy. With Anmol Bali, Bureau Report, India Today.